जय जगन्नाथ वेलकम टू MatSciOdia सुप्रभात आज सेशन को समस्त को स्वागत बहुत दिन पर आम लाइव क्लास आसना समस्त जल्दी जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो तुम सांग साथी मान भितर ए क्लास टी को शेयर कर दियो जो तुम कोठी भी डाउट रोची जदी क्लास इंटरेस्टिंग लागुनी ताले प्लीज काइंडली रीच आउट एज योर कह जे सर मो ए जगह बुझी पानी ये मु चेष्टा करी आज क्लास को बहुत भल मात्रा रे इंटरेस्टिंग वे रे पढ़िया ପାଇଁ चेष्टा करी समस्त जल्दी जल्दी ज्वाइन कर दियो लेट्स ज्वाइन क्विकली समस्त जल्दी जल्दी ज्वाइन कर दियो लेट्स ज्वाइन क्विकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आयुष्मान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी क्लास हो डोंट वरी आयुष्मान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी क्लास आसीबो किस दिन परे आयुष्मान पचले सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खूब शीघ्र क्लास आसुची डोंट वरी बहुत शीघ्र आम ऑर्गेनिक रो क्लास नहीं आसछु सो डोंट वरी आम शीघ्र रू शीघ्र क्लास नहीं आसीबा ऑर्गेनिक रो तुम मान रिक्वेस्ट तुम मैंने जल्दी जल्दी एभले क्लास को देखु था एंजॉय कर था आम सहित कनेक्ट हेकी रुह प्लीज डू कनेक्टेड विथ आवर क्लास यस देवारचंद सर संतोष साहू कहले डीपी सर यस देवारचंद सर नहीं आसीबे क्लास ओके सो लेट्स गो फॉर द क्लास आई एम योर पूर्ण सर यू नो वेल आई एम योर पूर्ण सर मु तुम मानकर केमिस्ट्री ट्यूटर आज आम कोट देखी नवा आज कोट होची लर्न फ्रॉम यस्टरडे live for today hope for tomorrow the important thing is not to stop questioning I think मात्र 7 जन पिला 7 जन पिला लाइव अछंती बट चारिटा ही लाइक आछि प्लीज लाइक बढ़े दियो प्लीज लाइक द क्लास सो जहाँ भी आमे शिखुचे अतीत रु शिक्षा लाभ करबा जिंदे हम मिस्टेक जीवन में न हबो आउ वर्तमान पय बंचबा आउ भविष्य को आशा रखी कि वर्तमान पय ही बंचबा the important thing is not to stop questioning आमे जो भी काम करूचे से काम को क्वेश्चन करिकी अटकी जीवा हबनी आमको सब बेले आगु आगु जीवा पड़ो केबे भी आमे अटकी जीवा हबनी आमे सब बेले एई भलिया हमर जीवन रो चर्या को बढ़ी बढ़ी नबा पड़ो तो आमे देखिबा आज रो क्वेश्चन कोन रहिछि प्रथम क्वेश्चन रहिछि द if the graph of log a minus x versus against t is a straight line the order of the reaction is this order of the reaction से तोले कोन होई थाय जदी एटा गोटे स्ट्रेट लाइन ही थाय ग्राफ तो जदी गोटे स्ट्रेट लाइन ताले ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कोन हबो के कहबो ग्राफ ऑफ log a minus x versus t रहिछि गोटे स्ट्रेट लाइन देन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज what is the order of the reaction संतोष साहू कहले बी संतोष साहू देखुतिली जे या प्रभु बॉटनी रो बहुत सुंदर आंसर दोतिले बहुत बढ़िया भाव रे क्लास को अटेंड करथिले आ क्लास रे मजा नउथिले बढ़िया लागिला तापरे आयुष्मान महांती कहले जे फास्ट हबो ओके सो देखिन भाई यार सटीक उत्तर कोन यार सटीक उत्तर होची ऑप्शन नंबर ए सॉरी ऑप्शन नंबर बी होची यार सटीक उत्तर कौन को अगला ना log a minus x versus t जदि हमें प्लॉट करिबा हमें गोटे ग्राफ पाइबा log a minus x versus t जदि नबा ताले गोटे ग्राफ पाइबा से ग्राफ टा केमदी ना डिकेइंग ग्राफ पाइबा अब तार स्लोप केता आसीबो स्लोप विल बी योर -k/2.3 not 3 तम बचरबे सर आपण कोन मने रखि दोचुनी ना कोन ट्रिक अछि यार ट्रिक अछि लेट्स गो कौन ट्रिक log the trick is your k is equal to 2.303 by t
K is equal to 2.303 by T log A by A minus X, log A by A minus X. बर्तन मु कौन कली ना log A minus X को लेफ्ट साइड को नहीं जीवी, log A minus X को लेपट को नहीं क्या आसबी, लापट को नहीं क्या आसले T is equal to कौन है जीवो 2.303 log A minus log A minus X. तो तुम्हें पचारे सर एटा केम देला log A minus log A minus X. तले माने गोटे फार्मूला अछि log A by B is equal to log A minus log B. ताले याकू जेतबेले तुमे सॉल्व करिवो बा सॉर्ट आउट करिवो बा रीअरेंज करिवो कोन पाइबो log A minus X, log A minus X will be equal to minus K by 2.303 multiplied by T plus log A. So हमारा y intercept कौन आसिला, y intercept आसिला log A, y intercept will be log A, remember. But what is the slope? The slope of the reaction, sorry, slope of the graph is plot is minus K by 2.303. संतोष साहू पचारचंदी जे सर को-फाउंडर माने कोन, को-फाउंडर माने संतोष साहू जे फाउंडर के सहित जे सहयोग करछन सामान्य मात्रा रे. फाउंडर ए प्लेटफॉर्म रहउछन MatSciOdia रो बसंत सर लीजेंड और को-फाउंडर के. A question if the activation energy of a reaction is low, the reaction is relatively reaction कौन हो slow ना fast and instantaneous ना moderate ना cannot be said. कौन हो जदि activation energy टा low थिबो ताले reaction टा कौन हो obviously reaction कौन हो हमर reaction जदि हम देखिबा एटी reaction हो तुमरो fast and instantaneous माने एते शीघ्र रिएक्ट करिवो जे तुम्हें आशा ही कर रही हो बहुत शीघ्र रिएक्ट करबा के लागिवो. It will be fast and instantaneous. Okay, so the reaction will be your fast and instantaneous. तापर the unit of rate constant for a zero order reaction रो यूनिट कोन हो zero order एटा 2016 रे क्वेश्चन आस्तिला 2016 रे ई क्वेश्चन आस्तिला जे zero order reaction रो रेट कांस्टेंट रो यूनिट कोन हो रेट कांस्टेंट रो यूनिट कोन हो मात्र 8टा पिला वाच करछन किंतु 5टा लाइक आछि माने तार अर्थ जे ए क्लास भाड़ में जाए कौन करता है ये क्लास कौन देखता है ये क्लास किंतु क्लास भाड़ में जाए कहला हबनी तुमको फोकस करिया को पड़ियो नहले मार्क आसीबो कि ना ग्यारंटी नहीं. मार्क एमिति मन को मन आसी जाएनी आमको परिश्रम करिया पड़े तुमको परिश्रम करिया पड़े समस्त मिसी के परिश्रम करिया पड़ियो. प्लीज लाइक द क्लास, प्लीज लाइक जो माने भी वाच करछो प्लीज लाइक दिस सेशन otherwise it is not encouraging us. हमको एनकरेज करिवनी तुम मैंने प्लीज लाइक कर दियो क्लास को. तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज होबो तुमरो कोन जीरो ऑर्डर रिएक्शन रो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स. तो यार फार्मूला कोन ना जे कोनोसी गोटे रिएक्शन रो जदि हम देखिबा फार्मूला होची मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स. मोल लीटर इनवर्स रो पावर 1 minus n. What is n? N stands for zero order reaction. N stands for zero order reaction. Again, please like the reaction, please like this reaction and please like this class also. So mole liter inverse of power 1 minus n second inverse. N hochi tomorrow order of the reaction. N is the order of the reaction. N is the order of the reaction. Okay. ताले कौन हो n जगह जो तुम्हें जीरो पुट कर दो n जगह तुम्हें यदि जीरो पुट कर दो it will come out to be mole liter inverse of power 0 mole liter inverse of power 1 minus 0. So it will be mole liter inverse second inverse. It should be mole liter inverse second inverse. That is option number C.
The unit of rate constant for a second order reaction is second order reaction ro unit कौन होगा? Second order reaction रो unit कौन होगा? संतोष, मनोज, जयंती दास, सुशांत ए पांच जन ही अछंती देखिया बोले माने मेसेज करूछंती अन्य माने जो माने भी देखुछ प्लीज मेसेज करो लुची लुची देखो नहीं मेसेज करी जाओ भाई लुची लुची देखो नहीं गुड मॉर्निंग संतोष सुशांत नायक कहले गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग ए क्वेश्चन रो सटीक उत्तर कोन हो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रो रेट कांस्टेंट रो यूनिट कोन हो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रो रेट कांस्टेंट रो यूनिट कोन हो ना तुम जो देखिबो फार्मूला होची मोल लीटर इनवर्स रो पावर 1 n n जगह पड़िबो 2 n जगह 2 पड़िबो n जगह 2 पड़ले ये कोन हो मोल लीटर इनवर्स रो पावर -1 -1 second inverse that is mole inverse liter second inverse mole inverse liter second inverse so option number B is the right answer option number B is the right answer okay next question jiba देखिबा प्रथमे के सठिक उत्तर दोछन द एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ ऑफ ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन गोटे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रो हाफ लाइफ रो एक्सप्रेशन कोन गोटे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रो हाफ लाइफ रो एक्सप्रेशन कोन रहिछि सेही आधा जीवन रो expression now lambda is equal to 0.693 by k lambda is equal to 1 by a k 1 by a by 2 k none of these कोटा हब सठिक उत्तर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रो हाफ लाइफ आधा जीवन माने कोटा तो जदि हमें सठिक उत्तर देखिबा बढ़िया बहुत बढ़िया संतोष उत्तर दैछन्ती ठीक उत्तर जे लैम्डा इज इक्वल टू 1 by ak सो इट इज लैम्डा इज इक्वल टू 1 by ak मु कहि रखुची प्रत्येक दिन हमर ए भलिया क्लास रहउची दिन को 2 घंटा घंटा रु 2 घंटा मझिरे गोटे दिन ब्रेक हे जैतिला दैट इज योर न्यू ईयर गोटे दिन ही ब्रेक हेतिला नले एक त घंटा रहइबो न 2 घंटा क्लास जेमि देले रहइबो प्रत्येक दिन डोंट मिस द क्लासेस and you will definitely enjoy the classes here so it is kono na lambda is equal to jodi dekhiba lambda is equal to 1 by ak lambda is equal to 1 by ak this is for second order so second order re jodi dekhiba zero order pai lambda is directly proportional to k lambda is your half life and for first order lambda is independent of k and for second order lambda is inversely proportional to k next so this is your lambda means half life period okay zero order first order second order तापर next जिबा क्वेश्चन 75% of a fast order reaction completes in 32 minutes 75% सरिया को 32 मिनिट लागिला 50% सरिया को केते मिनिट लागिवो केते मिनिट समय लागिवो 50% सरिया 10 मिनिट 8 मिनिट 16 मिनिट ना 64 by 3 मिनिट केते समय लागिवो 50% सरिया को केते समय लागिवो तुम माने को पुनी रिक्वेस्ट तुम माने सांग साथी माने को भितर प्लीज शेयर कर दियो क्लास टी को एवं लाइक कर दियो सब्सक्राइब कर दियो चैनल को नहले चाट करि परिबो ही नाही चाट मसला खाई परिबोनी त सब्सक्राइब भी कर दियो एडी कुनी घोडेई कहले सर 16 मिनिट संतोष साहब कहले सी ताले सठिक उत्तर कोन होची सी सठिक उत्तर जदि हम देखिबा फार्मूला देयर इज अ फार्मूला that T75% is always equal to 2 into T half माने T 50% T 50% आधा जीवन रो 2 गुण होची 75% एटा गोटे फार्मूला अछि तुमरो मन रखियो पढाइतिला जब तुमे मन रखिछो ताले एग्जाम रे डिराइव कर दिन पळैतिबो तेनु
T 25%, sorry, T 50% kete hoba na T 50% will be T 75% divided by 2. So T 75% divided by 2. T 75% ର value କେତେ ରହିଛି 32 divided by 2. So this is equal to 16 minutes. This is equal to 16 minutes. Next, the half-life of a radioactive element is 1580 years. गोटे radioactive element ର half life अधा जीवन होची 1580 दिन. How long will it take to reduce to 1/4 of its original mass? 1/4 भाग हबाकू केते दिन लागिवो? 1580 दिन रे से अधा ही जाउची. 1/4 भाग हबाकू केते दिन लागिवो? संतोष साहू कहले ए अन्य माने कोन उत्तर दबो? तमे ए प्रश्न को आउरी बढ़िया उत्तर वे रे हमें बुझी भी परिबा. तो तुमे एमिति बुझो जे रेडियोएक्टिव एलिमेंट ता 1580 दिन रे अधा हेला. आउ अधा हबाकू केते दिन लागिवो? 1/4 कहै छी. तो आउ अधा हबाकू आउ केते दिन लागिवो? हाफ हबाकू होला 1580 दिन. आउ अधा माने 1/4 हबाकू केते दिन लागिवो टोटल? तो एटा ध्यान देकी देखो किमि बुझिबो ना. अधा हबाकू केते दिन लागिला? 1580 दिन. आउ अधा माने 1/4 हबाकू आउ 1580 माने 3160 ईयर हबो. आउ अधा हबाकू माने 1/8 हबाकू आउ 1580 दिन लागिबो. Exactly, Santosh, you are right. टेक्निक होची सबसे बड़ कथा. जे तुमे जो देखिबो यार दी गुण 200 को 12 2 1 2 200 को 12 2 1 2 1 3 2 3 6 1 7. तो 1/8 सूर्य को 7320 दिन. 1/4 हबा को 3160 वर्ष. तो यार सठिक उत्तर हबो ऑप्शन नंबर A. Which of the following does not affect the rate of the reaction? Rate of the reaction ऊपर कोडा प्रभाव पकाए नहीं. ना change in enthalpy, ना temperature, ना concentration, ना catalyst. कोडा rate of reaction ऊपर कौनसी प्रभाव पकाए नहीं. Which among the following does not affect the rate of the reaction? मत भारी निद आज माडुछ. हठात काहे जानि. ए 7 जन पिला कोन हे गेले आज क्लास रे? लाइव क्लास रे ते कम पिला. एग्जैक्टली ठीक उत्तर कहचंदी संतोष साहू जे चेंज इन एंथैल्पी चेंज कर देले रेट ऑफ रिएक्शन किछि इफेक्ट पकाए ना. फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इज दिस. इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कोन हो गोटे जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे A is equal to minus KT plus A naught. KT is equal to A by A naught. KT is equal to A minus A naught. A is equal to KT minus A naught. What is A naught? A naught is the initial concentration. A naught is the initial concentration. Could have यार सठी उत्तर. संतोष कंकल ए तो यार सठिक उत्तर होची देखिबा जदी हमें कोन केमिदी कोन ना तुम जदी जानिचो के विल बी इक्वल टू ना फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन. फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन by T. And what is final concentration? That is mod A. What is initial? Minus mod A concentration of A divided by T. ताल हमरा कोनास जीव ना mod A will be equal to KT will be equal to mod A minus concentration of A minus concentration of A.
So it will be your concentration of A will be equal to, this is equal to minus KT ताले आसजिवो plus A naught. बुझी पारछो ना कार डाउट होछ. Next जिबा, the number of electrons with 1 coulomb of charge will be 1 coulomb रे केतटा इलेक्ट्रॉन रहिछि 1 coulomb रे केतटा इलेक्ट्रॉन 2025 गोटे coulomb रे केतटा इलेक्ट्रॉन रहिछि 6.25 into 10 power 11 टा 1.6 into 10 power 19 टा 6.24 into 10 power 18 टा 5.46 into 10 power 29 टा केतटा इलेक्ट्रॉन रहिछि गोटे coulomb रे যদি আমি দেখিবা কেতটি কুলম না গোটে ইলেকট্রন র চার্জ হচ্ছে 1.6 into 10 power minus 19 কুলম তো এতিকি চার্জ রে রହୁଛି গোটে ইলেকট্রন তাহলে গোটে কুলম রে কেতটা ইলেকট্রন না এতিকি ডিভাইডেড বাই 1 divided by this factor for then for আমি কোন কই পরিবা what is মানে ইয়ার ভ্যালু কোন 1.6 1 by 1.6 in 10 power minus 19 ना यार को यदि हम सॉल्व करबा it should come out to be 6.24 or 6.25 into 10 power 18 into 10 power 18 हबो सो सठिक उत्तर हबो हमरा ऑप्शन नंबर सी आ गोटे सुंदर उत्तर दैछंदी संतोष जी सर एंड वी कैन आल्सो यूज n is equal to q बढ़िया फैराडे सॉरी फैराडे नहीं एटा n is equal to q is equal to हमारा थिला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अनुसार n will be equal to q n will be, q is equal to ne not n is equal to q q is equal to ne so n will be equal to q by e n is equal to q by e this is your quantization of charge n is equal to q by e q माने कोन q माने हम जो देखिबा q माने होची तुम्हारा जो charge measured in coulomb divided by e means the charge on electron clear so n will be equal to q by e तब नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा फटाफट आज जल्दी से क्वेश्चन करिबा द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज unit of rate constant for a zero order reaction is mole inverse second inverse mole liter inverse second inverse mole liter second inverse mole inverse liter second inverse सठिक उत्तर कौन ऑलरेडी हमें एटा करि सारछे जीरो ऑर्डर रिएक्शन रो तो यार सठिक उत्तर अब ऑप्शन नंबर बी संतोष कहले बी what will be the amount of I 128 remain left after 50 minutes if the half life is 25 minutes sorry 25 minutes 25 मिनिट भितर जदि सी अधा हो जाउची 50 मिनिट पर केते रहउची 50 मिनिट भितर केते रहउची ऑब्वियसली 25 मिनिट रे जदि अधा हला 50 मिनिट रे आउ अधा हबो माने अधार अधा हबो माने 1/4 ही कोन हबो बळका रहबो बाकी सब खत्म then यार सटीक उत्तर हबो ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन आसी half life of a first order reaction is directly proportional to initial concentration of reactant half of the rate constant same for all reactions independent of the initial concentration of reactant half life गोटे first order reaction रो half life टा म ऑलरेडी भी कहितली से कोनोसी गोटे first order reaction रो half life कोन थाए ना टोटली निर्भर करे नाही का ऊपर रेट कांस्टेंट ऊपर सो यार सटीक उत्तर अब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर डी The rate of a chemical reaction is expressed as change in concentration per unit volume, change in concentration per unit time, change in pressure per unit volume, change in energy per unit time. आमे chemical equation रो rate को हमें केम दे लिखिले K will be equal to your rate of change of concentration. Rate of change of concentration is known as K. So यार सटीक उत्तर अब हाँ ठीक उत्तर कहले संतोष ए यार सटीक उत्तर अब ए चेंजिंग कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम एटा प्रॉब्लम करे दी पिला बुझियो रे समस्या तापर नेक्स्ट द रेट कांस्टेंट फॉर ए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन एटा केते थरा हमें करबा आंसर होची ऑप्शन नंबर बी सेकंड इनवर्स
sorry ମତେ ଆଜି ଭାରି ନିଦ ମାଡୁଛି। ଓକେ ଆମେ ଏଇଠି ଥିଲା half life of a first order reaction is independent of initial concentration. Initial concentration सहित डिपेंड करे नाही। half life of a first order reaction is independent of half life of a first order reaction is independent of concentration, independent of initial concentration. First order reaction ro unit already second inverse सरिची 17 number question. The reaction with rate law is equal to rate is equal to k into a is ताले एडी rate इडार को order इडार order कौन ना rate is equal to k multiplied by concentration of a. तो यार order जदि हम देखिबा order k करिछि order उत्तर कहबो केवल नंबर देगी अन्य वे रे कहले तार अर्थ बुझा पडु नाही। तो 17 रो सटीक उत्तर जदि देखिबा 17 होछि तुमर कोन ना फास्ट ऑर्डर कारण ए र पावर रही हमर 1 सो इट इज अ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम नबो ताले एटा कोन हबो ना कंसंट्रेशन एवं टाइम बढ़िला आरो कंसंट्रेशन एक्चुअली कमिबो then for a zero order reaction the plot will be a straight line decaying plot as next, if the concentration of reactant is doubled in a fast order reaction, the rate becomes rate कौन हबो half हे जिवो ना rate कौन हबो double हे जिवो 4 times हे जिवो unchanged हे जिवो जदि तुमे concentration टा को double कर देलो दी गुणा कर देलो fast order reaction रो rate टा कौन हबो so concentration is doubled ताले कौन हबो rate fast order reaction राजेश कुमार साहू गुड मॉर्निंग केमदी अछ राजेश कुमार साहू पिला माने म तुमान को कहबा को चाहे गत 2 दिन तळे राजेश कुमार साहू सहित मोर देखा आइतला अर्थात गत सोमवार दिन नववर्ष उपलक्षे सॉरी गत गुरुवार दिन बृहस्पतिवार गुरुवार दिन नववर्ष उपलक्षे इंग्राजी नववर्ष उपलक्षे देखा आइतला राजेश घर और राजेश बहुत खुशी लागितला तुमरा आगमन मत वर्तन कुह कंसंट्रेशन जदि डबल हे जिवो रेट कौन हे जिवो ओम पाणिग्राही कहले बी संतोष कुमार केवल मुंड तीनटा हलै देले उत्तर 19 रो बी डबल हे जिवो देखि न भाई यार सटीक उत्तर कौन रहिछि कौन हबो यार सटीक उत्तर डबल हे जिवो अरे केमिदी ना कंसंट्रेशन जो देखिबा फास्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑब्वियसली सब जे कोनसी रिएक्शन कोन हुए ना रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन ऊपर डिपेंड करे रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन ऊपर डिपेंड करे रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन जदि डबल हे जिवो ताले जे कोनसी रिएक्शन रो रेट से डबल हे जिवो बट रेट कांस्टेंट ऊपर कोन हबो कहला रेट कांस्टेंट कोन हबो ये तो रेट ऊपर कहला रेट ता डबल हबो रेट कांस्टेंट कोन हबो what will happen to rate constant anyone who can say what will happen to rate constant रेट कांस्टेंट कोन हबो अच्छा रेट सिना डबल हे जिवो कारण रेट इज जे कोनसी रिएक्शन रो फर्स्ट ऑर्डर की जीरो ऑर्डर की सेकंड ऑर्डर रेट डबल हबो किंतु रेट कांस्टेंट कोन हबो कंसंट्रेशन जदि डबल हे जाउची रेट कांस्टेंट कोन हबो let us check concentration of the reactant कोन हेला डबल हे गेला concentration of the reactant डबल हे गेला सो ए जदि हम देखिबा ए रो वैल्यू जा थिला ए रो वैल्यू सपोज कोन थिला ए रो वैल्यू 2 हे जिवो ताले a - x कोन हे जिवो a - x will be 2 into a - x
कारण सब डबल हो जिवो कंसंट्रेशन ताले यार k वैल्यू कोन हो k will be 2.303 by t log a by a minus x log a by a minus x अच्छा सेकंड केस रे डबल हो जिवो k रो वैल्यू कोन हो जिवो k will be 2.303 by t log 2a by 2 into a minus x. So 2 will remain cancelled. Log a by a minus x 2.3 that is equal to k. तामने let me write here k1. तामने ये कौन होगा ना 2.303 by t log a by a minus x log a by a minus x which is always equal to your k1. So k will be equal to k1. So rate constant never changes by changing the concentration of the reactant. Concentration of the reactant change करियो द्वारा rate constant केबे भी change जीव नहीं. So rate constant always remains fixed for a particular zero order की first order particular reaction ପାଇଁ fixed रहबो always remain fixed. Okay ठीक अछि बुझियला पिला धीरे धीरे कमी जाउछन्ती कथा कोन molecularity of an elementary reaction molecularity of an elementary reaction मु आंसर कहि देली अछि always equal to order सहित इक्वल हो एटा बहुत क्रिटिकल लेवल क्वेश्चन always one of सबुबले always an integer हो can be fractional तो केबे भी होबनी कस्मिन काले माने जो कोनांदी तार बापा जा 14 पुरुष रो मोलिकुलारिटी रो 14 पुरुष पळैले भी केबे भी ले से फ्रैक्शनल हबो नाही ताले मोलिकुलारिटी ऑलवेज इक्वल टू ऑर्डर केबे केबे सब बेले नुह ऑलवेज 1 मोलिकुलारिटी 2 भी हबो 3 भी पारे बट ऑलवेज इंटीजर सब बेले हबो तेन यार सटीक उत्तर होची ऑप्शन नंबर सी ऑलवेज एन इंटीजर सी हबो यार सटीक उत्तर तुमे जहां भी आंसर दो जो संतोष हो जे भी ले सेठ तुम तार आगर नंबर लेख 20 कि 19 कि 21 कारण एमती हुए बेले बेले आम टाइप कला बेले अधा बाट पलि जाइथिबु टाइप होथिबो देखिला आडू अधा बाट पलि कि आउ गोटे क्वेश्चन डिस्कशन चलथिबो ये कहथिबो सर बीबी से कहथिबो सर सीसी ए कहथिबो सर डीडी ए कहथिबो ए देखिला आडू का हमर आंसर आउ गोटे कोन पळे आस्थिबो नन ऑफ दिस molecularity 3 रो अधिक हेबो नाही संतोष कहले molecularity never exceeds 3 exactly you are right संतोष molecularity के भी 3 रो अधिक हेबो नाही a catalyst increases the reaction rate by increasing increasing delage increasing activation energy providing alternate pathway increasing equilibrium constant एटा गोटे क्रिटिकल लेवल क्वेश्चन थिंकिंग कोइ वाला क्वेश्चन भाबा आंसर दियो कोन हबो कौन कह गला जे कैटलिस्ट जते बळे रहउची रिएक्शन रे से कौन होची डेलेज रिएक्शन रेट इंक्रीज करबा पई कौन करियो पड़ियो ना डेलेज को बढ़ाया पड़ियो डेलेज बढ़ेले हबो नाही तापरे एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ेइबो कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ेइ न थाए बरम कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कमई थाए कमेबा द्वारा रिएक्शन रा फास्टर होइथाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव पाथवे किछि अलगा वे दबो कैटलिस्ट कोन करिवो ना कैटलिस्ट जो साइड रे रिएक्टिव रिएक्शन गुडा कहि पार नथियो बाइंड कर पार नथियो ताकु नेकी घट सूत्र भलिया जोगाजोग करि दो कि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इंक्रीज करूनी तो यार सटीक उत्तर हबो हम जो देखिबा सटीक उत्तर होची ऑप्शन नंबर सी प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव पाथवे व्हिच रिएक्शन हैज ए कांस्टेंट रे मान गई तो रेट कांस्टेंट कांस्टेंट कहार माने सी टाइम ऊपर डिपेंड करू नथिबो कांस्टेंट रेट माने इट इज इनवेरिएबल विथ टाइम फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर जीरो ऑर्डर ना थर्ड ऑर्डर तो देखिबा सबुडा टाइम ऊपर डिपेंड करूची सबुडा तो टाइम ऊपर डिपेंड करछि जे कोनसी कांस्टेंट देखो रेट कांस्टेंट के ऑलवेज डिपेंड्स अपन टाइम सबुडा ताले you can say that which one is concentration independent
concentration independent कोड हबो constant rate. So answer is zero order. Exactly, you are right. Zero order. Zero order माने जदि हम देखबा रेट कांस्टेंट कोन हेतै ना गोटे कांस्टेंट वैल्यू आस्ता है रेट कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट इस्ता है तार अर्थ हमें कहि परिबा जीरो ऑर्डर रे जीरो ऑर्डर इज somehow does not depend upon time ता माने हमें कहि परिबा टाइम ऊपर डिपेंड करले भी जीरो ऑर्डर रे तुम जो देखबा जीरो ऑर्डर रे तुम्हें एपटे कंसंट्रेशन बढ़े 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 नियो कोडा यार कंसंट्रेशन रिएक्टेंट रो किंतु एपटे रेट कांस्टेंट रे किछि फरक पड़िबनी बट फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रे भी फरक पड़िबनी किंतु रेट रेट एडे कांस्टेंट रहबो रेट कांस्टेंट कांस्टेंट रेट दिडा अलगा वर्ड तो एडे रेट ता कांस्टेंट रहबो एडे रेट ता कांस्टेंट रहबो तो कांस्टेंट रेट ए क्वेश्चन टा टिके ए जगहटा बुझियार मु बेले प्रथम भूल कर देथि रेट ता कांस्टेंट रहबो रेट विल रिमेन कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर हम जानचे जीरो ऑर्डर पय रेट ता कांस्टेंट रहबो मु भी बुझियार भूल करथि और द रिएक्शन 2NO plus O2 gives rise to 2NO2 nitrogen monoxide when reactive with oxygen produces nitrogen dioxide rate कौन होगा k and rate is given by k multiplied by concentration of NO square multiplied by concentration of O2 then order of the reaction कौन होगा इटी 2314 1 2 3 4 4 1 2 3 कौन होगा आंसर यार order 2 ना 2.5 ना 3 ना 1 ना 4 कौन होगा यार order ए संतोष साहब कहले बीबी संतोष साहब कहले 23 रहउची बीबी 23 टा दीटा बीबी आनिबो 3 बहुत सुंदर उत्तर संतोष साहब कहले बीबी केमिति जानिलो ना एडे 2 अछि एडे 1 अछि 2 2 गो 1 रे मिसे देले 3 2 मिसाण 1 3 बजा भाई गिनी which statement is correct order depends upon stoichiometry पर order depend करे order is determined experimentally order is always a whole number order is equal to molecularity always order becomes equal to molecularity कोडा सबबले करेक्ट सबबले order stoichiometry पर निर्भर करे कि no rate depends upon stoichiometry rate केमति जदि हम देखिबा suppose a good reaction अछि 2A plus B gives rise to 3C ताले rate कौन होबो ना rate of disappearance rate will be equal to 1 by 2 into rate of disappearance of A which is also equal to 1 by 1 rate of disappearance of B which is also equal to 1 by 3 rate of formation of C तो obviously जदि हम देखिबा जे rate depends upon stoichiometry but order does not order is determined experimentally हाँ order को हमें experimentally determine करि थाउ संतोष कुमार पाणिग्राही कहले संतोष कुमार साहू ओम पाणिग्राही दुई जन पिला कहले 24 रो हबो बीबी order is always a whole number ना order can be fractional order is molecularity always सबले order molecularity समान हो बोले किछि गारंटी नै सो सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर बी order is determined experimentally next but molecularity is determined theoretically theory को देखि कि बहुत स्टेप को देखि कि हमें कहि परिबे आर molecularity कोन for a fast order reaction the time required for 75 completion is t half 2 t half 3 t half 0.5 t half 75% कंप्लीट होबा को केते समय लागिवो एमिति कले 75% कंप्लीट हे जो एमिति माने टी हाफ माने दी तरह टी हाफ कला सो यार फार्मूला मन रखो t 75% will be always equal to 2 into t half आउ कोन फार्मूला ना t 99.9% is always equal to 10 into t half. So यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर बी बढ़िया उत्तर दैचंदी ओम पाणिग्राही एवं संतोष 26 नंबर which graph gives a straight line for fast order reaction
फास्ट ऑर्डर रिएक्शन पे कोडा स्ट्रेट लाइन दिए ए वर्सेस टी log a versus t 1 by a versus t रेट versus a तो हमें सब गुडा गोटे फास्ट ऑर्डर रिएक्शन रो देखि नबा आ का पई को ऑर्डर पई कोडा स्ट्रेट लाइन देखि न आंसर कोन हो 26 नंबर 26 रा आंसर कोन हो जल्दी से को 26 रा आंसर 26 रो उत्तर देले संतोष बी ओम मानिग्राही कहले बी log a versus t एग्जैक्टली यू आर राइट log a versus t बर्तन मते प्रश्न मोर प्रश्न होची जे a versus t केतोले स्ट्रेट लाइन आसीबो बा जीरो ऑर्डर पई कोन हो आंसर जीरो ऑर्डर जदी थांदा आंसर कोन होई थांदा जीरो ऑर्डर पई जीरो ऑर्डर पई जीरो ऑर्डर पई कोड हम ऑप्शन सो जीरो ऑर्डर पई जदी देखिबा ऑप्शन ही हबो कोन पई कारण a वर्सेस t हबो तुमरो गोटे स्ट्रेट लाइन अच्छा सेकंड ऑर्डर पई 1 by a वर्सेस t सेकंड ऑर्डर पई हबो 1 by a वर्सेस t ठीक अछि बट सेकंड ऑर्डर हमर नाही मुंडा खर्च करे नाही रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन प्रेशर टेंपरेचर इनिशियल अमाउंट रेट कांस्टेंट का ऊपर निर्भर करे प्रेशर ऊपर ना कंसंट्रेशन ऊपर ना टेंपरेचर ऊपर ना इनिशियल अमाउंट so rate constant will always depends upon exactly you are right Santosh the option number C that is T temperature rate constant temperature ऊपर सबदा बेले डिपेंड करिवो काहे कि ना रेट कांस्टेंट काहे कि टेंपरेचर ऊपर डिपेंड करिवो कारण आरएनएस कहि देले जे K is equal to A into e to the power minus C by RT आरएनएस कहि देले माने K will always depends upon temperature के टेम्परेचर बिना रही परिबो नहीं पर कोलिजन थ्योरी भी आसिला अवश्य सब थ्योरी रे भी it tells about somehow K is equal to A into the power minus A by RT that is K is dependent upon T. Next question niba temperature is increased for a fast order reaction the rate constant increases because collision frequency increases only activation energy decreases more molecules have energy greater than EA equilibrium shifts forward temperature जेतेबेले increase हुए if लिखिया को भूली जाइछि if temperature is increased the rate constant increases rate constant ता बढ़ी थाए काहे हमें देखिबा जे k is equal to a into e to the power minus a by rt तो हमें जहाँ भी कहबा तक मैथमेटिकली कहबा लॉजिकली कहबा नहीं मैथमेटिकली कहबा सो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस ओनली कोलिजन फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर बढ़ेले इंक्रीज हुए नहीं केवल ता सहित आउ किछि भी बढ़े एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हुए हां एटा ठीक कथा मोर मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू ए इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फॉरवर्ड यार सटीक उत्तर जदि हम देखिबा सटीक उत्तर हबो मोर मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू ए तो एक्टिवेशन एनर्जी मैक्सिमम मॉलिक्यूल रो कोन हे जाउची ना मैक्सिमम मॉलिक्यूल रो एक्टिवेशन एनर्जी ए टू अधिका हे जाउची माने एक्टिवेशन एनर्जी रो अधिका हे जाउची मैक्सिमम मॉलिक्यूल सेत भाई से कोन हे जाउची फॉरवर्ड मूव करची अच्छा तुम कहबो जे रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस काहे कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो बोली कि रेट कांस्टेंट इंक्रीज होबनी कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज देले रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो किंतु टेंपरेचर बढ़िले कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बढ़िबो किंतु रेट कांस्टेंट जे कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़िबा पई हबो ना
केवल कोलिजन फ्रिक्वेंसी बढ़िले रेट कांस्टेंट बढ़िबो नाही। रेट कांस्टेंट बहुत सारा फैक्टर ऊपर डिपेंड करे। तो रेट कांस्टेंट तुम जदि लक्ष्य करिवो कहा ऊपर मैक्स मैक्स टू मैक्स डिपेंड करे ता माने कारण तुमरा एक्टिवेशन एनर्जी ऊपर रेट कांस्टेंट समाउ डिपेंड करे। रेट कांस्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी ऊपर तेणु एक्टिवेशन एनर्जी रो कथा जोडी कहैछि सेडा होछि यार सटीक उत्तर। ता माने अधिका रो अधिका मॉलिक्यूल रो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी टू अधिका ही गला। For the reaction, if A is equal to 0, the reaction will be जदि एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो रिएक्शन टा कोन हो वेरी स्लो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फास्ट ऑर्डर एंडोथर्मिक। जदि ए टा 0 हो आशा करछु बुझिएला समस्त को। तो for a reaction if E is 0 the reaction will be कौन हम ना K is equal to A into e to the power minus A by RT। संतोष एवं ओम पाणिग्राही कहले 28 रो बी यदि टी पार्ट टा 0 हबो ए पार्ट 0 हबो इफ ए पार्ट रिमेन्स 0 ताले कोन हबो ना K will be A into e to the power 0 that is K will be equal to A। K will be equal to A that is K always becomes a constant। K जदि कांस्टेंट हो जाए ताले से कोन जो रेट कांस्टेंट गोटे ए हो तार माने K टेम्परेचर ऊपर आउ डिपेंड करिला नाही। ओम चिन्हिला की चिन्हि ओम चिन्हिल की संतोष पचारे सर ओम चिन्हिल की मु भी जानि पालिनी ओम के संतोष। तो यार सटीक उत्तर हो बी। Which plot gives a activation energy एमान भितर एक्टिवेशन एनर्जी के K versus T log K versus T log K versus 1 by T K versus 1 by T कोडा एक्टिवेशन एनर्जी रो प्लॉट। बढ़िया क्वेश्चन गुडा का आछी। इनिशियली क्वेश्चन गुडा इजी थिला एबे क्वेश्चन गुडा टिके थिंकिंग लेवल हाई थिंकिंग लेवल क्वेश्चन। एक्टिवेशन एनर्जी रो प्लॉट कोटा एक्टिवेशन एनर्जी जदि हम देखिबा K रो फार्मूला होची A into e to the power minus A by RT। तो K versus T रु किछि एग्जैक्टली जणा ही पड़िबनी किंतु जदि मु log K versus नै जिवि log K नै जिवि ताले एपटे कोन हिजबो ना log A एडा हिजबो minus A by RT। तो log A versus T नेले भी हबनी ताले कोन हबो log K versus 1 by T नबा पड़ियो अवश्य एडे 2.303 मल्टीप्लाई हिच बोली भाबो। सो log K versus 1 by T ने नहीं आसीबो जोडे तुमरो स्लोप आसीबो कोन स्लोप आसीबो माइनस ए बाई स्लोप आसीबो तुमरो माइनस ए बाई 2.303 आर। जो तुम्हें न बुझी परचो कोडे भी पचार पिला माने मु टिके स्पीड अप हो जाउ y इंटरसेप्ट आसीबो तुमरो y इंटरसेप्ट विल बी log a कारण 2.303 एपटे डायरेक्ट डिवाइड कर देली log को log रे कन्वर्ट कर देली। सो सी हबो सटीक उत्तर। सी को संतोष कहले सी को लॉक कर दिया जाओ। आप जीत गए हो 10 करोड़। संतोष साहब 10 करोड़ जीत गया। फॉर आइडेंटिकल हाफ लाइफ एट ऑल कंसंट्रेशंस रिएक्शन मस्ट बी आइडेंटिकल हाफ लाइफ यदि कंसंट्रेशन समस्तंगर समान रहिछि कंसंट्रेशन कोन रहिछि समान रहिछि हाफ लाइफ भी समान रहिछि ताले रिएक्शन टा कोन हिथिबो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर भारी हाई लेवल रो थिंकिंग क्वेश्चन सतरे कोन को गला जे कंसंट्रेशन हाई समान रहिछि ऑल कंसंट्रेशन रे हाफ लाइफ समान रहउछि ऑल कंसंट्रेशन रे हाफ लाइफ कोन रहउछि समान रहउछि माने तुम जदि ए नोच इनिशियल कंसंट्रेशन सपोज ए नोच ए सपोज नोच तमे 10 मोल नला 10 मोल लीटर इनवर्स प्रथमे तापर धीरे धीरे कंसंट्रेशन को बढ़े देला इनिशियल कंसंट्रेशन को सपोज 20 मोल भी कला
तापर भी हाफ लाइफ तुम से गोटे निर्दिष्ट आसला सपोज 5 मिनिट ये भी से 5 मिनिट ही आसला माने हाफ लाइफ सब बड़े समान आसला सब परिस्थिति ताले रिएक्शन टा कौन हाफ लाइफ टा सब परिस्थिति समान आसला तो हाफ लाइफ रो फार्मूला जीरो ऑर्डर जो देखिबा टी हाफ इज इक्वल टू कौन ना टी हाफ इज इक्वल टू ए बाय 2k ए बाय 2k ए बाय 2k ठीक अछि तो आम कहीपर के विल बी इक्वल टू ए बाय 2t हाफ ए बाय 2t हाफ ए जदि 2 गुणा हबो टी हाफ 2 गुणा हबो बोली कहछि ना टी हाफ किंतु समान रहइबो ताले एटा जीरो ऑर्डर हो नाही काहेकि ना ए जदि बढ़ुची टी हाफ भी बढ़िया को पड़िबो कारण के ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन गोटे रिएक्शन पई जीरो ऑर्डर रिएक्शन रो के वैल्यू सब बळे कांस्टेंट रहइबो ए जदि 2 गुणा हबो टी हाफ भी 2 गुणा हबो टी हाफ एटे 5 मिनिट हेकी हबो ना फास्ट ऑर्डर देखिबा क्वेश्चन ना बुझियो चेष्टा करो फास्ट ऑर्डर कले k will be equal to 2.303 by t log a by a minus x log a जदि बढ़े देली फर्दर log a मु log 2a कर देली ताले इडे पॉसिबिलिटी रहिची कारण एडे समहाउ k गोटे डिपेंड करची t ऊपरे आ log ऊपरे भी सो t हाफ जदि हम देखिबा t हाफ रो फार्मूला कोन t हाफ रो फार्मूला होची तुम्हारा 0.693 डिवाइडेड बाय 0.693 डिवाइडेड बाय k तो ये केवल k ऊपर ही डिपेंड करची ता माने तुम्हारा कंसंट्रेशन ऊपर डिपेंड करू नाही कंसंट्रेशन तुम्हें जेते कंसंट्रेशन बढ़ेले भी तार हाफ लाइफ पीरियड समान रहउछ सो इडे k रिमेन्स कांस्टेंट बुझियला सो इडर फर्स्ट ऑर्डर हेई पारे सेकंड ऑर्डर जो देखिबा tf सेकंड ऑर्डर पर फर्स्ट ऑर्डर हबार चांसेस रहे सेकंड ऑर्डर रो फार्मूला कोन ना 1 by a2k सॉरी into 1 by a into k हबो 1 by ak 1 by ak आसीबो 1 by ak ता माने हमें जो देखिबा a ऊपर डिपेंड करूची सो a ऊपर इंडिपेंडेंट कोड होची ना फर्स्ट ऑर्डर अन्य सब ए ऊपर डिपेंड करछि तेणु हमर यार सठिक उत्तर हबो ऑब्वियसली एटा फर्स्ट ऑर्डर तो सठिक उत्तर होची फर्स्ट ऑर्डर बहुत थिंकिंग लेवल रो क्वेश्चन रहछि बढ़िया लागिले क्वेश्चन उडा नेक्स्ट क्लास रे हमें ए क्वेश्चन उडा करबा 31 ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट क्लास रे करबा नेक्स्ट क्लास रे कोन करबा काइनेटिक केमिकल काइनेटिक्स रो एमसीक्यू और डीएफ रो क्वेश्चन नै के आस्तिबी मु डीएफ लॉ कंप्लीटली पढेबी डीएफ आउ कोऑर्डिनेशन और केमिकल काइनेटिक्स रो एमसीक्यू नेक्स्ट क्लास रे हम कवर करबा नेक्स्ट क्लास रे एडी किछि एक्चुअली प्रॉब्लम अछि नेक्स्ट क्लास को हम प्रॉब्लम सहित आसीबा और 10टा प्रॉब्लम मु करिवार भागथि मु 40टा क्वेश्चन नै के आस्तली किंतु 30टा क्वेश्चन आज क्लास को सारिबा को पड़छि नेक्स्ट क्लास को पुनी अथरे नेक्स्ट देखाबो माराथन रुद्रसव माराथन स्टार्ट हबो हमरो माराथन स्टार्ट हबो तुमरो एग्जाम टाइम रे माराथन स्टार्ट हबो अब खूब शीघ्र में इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज नहीं आछो इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज नहीं आछो तुमाना पई जा द्वारा तुमाना पई सुविधा हबो तुमाने पढी एग्जाम पई प्रिपेयर हे परियो खूब शीघ्र नहीं आछो आउ जो माने भी आम चैनल को सब्सक्राइब करि नांती चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु आउ बेल आइकन को दबाई दियंतु जेमि सब बेले क्लास आले टू मेसेज आसीबो आ बेल आइकन को जदि न दबाई थिबो क्लास आसिले एले मेसेज आसीबो न टू बोली की तेणु सब बेले गोटे रिक्वेस्ट बेल आइकन को दबाई की रखसंतु आ क्लास को हमको एमती भल पाइबा दी थांतु दो थांतु आगु को तुम माने बढ़ी थाओ आ हमको भी एमती बढ़ो थाओ तुम मान पई आमे आम मान को पई तुमे सबले ही कि एमती थाओ सबले आम मान को हृदय रे तुम माने तुम मान को हृदय आम माने एमिति गोटे बंधन बांधी दे थाओ परीक्षा जाए केवल से परीक्षा पर तमे किए ना मु एमिति दे मैक्सिमम पिला आपण किए ना मु किए परीक्षा पर किंतु परीक्षा जाए अंत तो चालू ओके
आ समस्ते सांग साथी ज्ञाति बंधु जहाँ भी अच्छा तुम मान भितर यहाँ को सेयार कर दियो जमी से এই क्वेश्चन गुड़ा को देखी पारे आपको प्रैक्टिस करि परिबे प्रैक्टिस करके एग्जाम रे गले एग्जाम रे भल मार्क आसीबो देखिबो এই क्वेश्चन तुमर ग्यारंटी एथरू सीएचएसई बोर्ड रे श्योर क्वेश्चन पाइबो ठीक अछि सीएचएसई बोर्ड रे श्योर क्वेश्चन पाइबो एथरे तनो अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू चलो हैव अ वंडरफुल डे काली की पुणी देखाबो काली की हमें ओडिया क्लास एमआईएल क्लास आ आईटी क्लास अच्छे आसंता काली एमआईएल आ आईटी क्लास अच्छी एमआईएल जो दिन हम मैथ आ आईटी हम ठीक अच्छे किंतु दिन को दुईटा गोटे रु दुईटा क्लास डेली जमी हम ठीक अच्छे।